हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी लाइफ में। माय नेम इज़ अम्बरीश तिवारी और आज मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो है कुछ हटके। मैं आज बात करने जा रहा हूँ फिर हेरा फेरी की। चकरा गए आप लोग। ये जो आज का टॉपिक है वो फिर हेरा फेरी का रेफरेंस से ही शुरू होगा। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन दे दूं दैट दिस इज़ one of the lessons of the lecture series that I've started, which covers all of the important bills and acts that have been passed by the parliament in this successfully and in this very successful and productive budget session of the 17th Lok Sabha. It was also the first session of the Narendra Modi government 2.0. Now let us look what the topic of today is. It is the banning of unregulated deposit schemes bill. So जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, I'll take you back to the iconic movie फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी में आपको वो सीन याद है when बिपाशा बासु comes out with the Lakshmi chit fund in some shady place in Mumbai and she says that 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा and Baburao, Sham and Raju, of course, to make quick money, in the heist of making quick money, they ended up depositing all of the assets they had, fixed and non-fixed, that is tangible and intangible. They mortgaged their own bungalow for 50 lakh rupees and brought out 50 lakh rupees from various sources, 10 lakh each and 20 lakhs from Rajpal Yadav by duping him. So that is just, that is all about just. बट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को समझने के लिए ये एग्जांपल देना आप सभी को बहुत ज़रूरी था, बिकॉज दिस इज व्हाट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स आर। वो मैं नहीं कहता हूँ आउटरेजियस डिमांड्स करती है, आउटरेजियस टर्म्स एंड कंडीशंस ले डाउन करती है कि 25 दिन में पैसा डबल, नहीं, सिर्फ यही पहचान नहीं है। दे विल सीम टू बी वेरी नॉर्मल थिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसमें उसमें तो इन्होंने इतनी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इम्पॉसिबल टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, इम्पॉसिबल टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी कि उनको पूरा होना ही वो एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ था और उस पर कोई बिलीव भी नहीं करेगा इन रियल लाइफ, बिकॉज इट वॉज अ मूवी, द एक्टर्स बिलीव्ड इट। बट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट incredible examples which every one of us would easily understand. That example could make every one of us easily understand as to what actually unregulated deposit schemes are. ठीक है, they are known as unregulated deposit schemes, Ponzi schemes, collective investment schemes, and one of the recent latest real life example, I gave you a real life example, a movie example. Now I'll give you a real life example, that is Sharda chit fund scam. Yes, you heard me. That was also a CIS, collective investment scheme, which was floated in Kolkata. And one fine day, after collecting the money from investors, the people who were the takers of the money, the depositors of the money, they just siphoned it off and completely vanished in the air. They became a thin air. No, they were to be found nowhere, be it Kolkata, be it Bengal, be it all of India. So this is the menace of unregulated deposit schemes, which basically came into vogue because such investment came into trend after 1991 liberalization, globalization and privatization, when stock market investing in stock markets, mutual funds and earning quick bucks out of it became a need of the hour to raise the living standard in the competing market of liberalization, privatization and globalization. So now let me go to the actual presentation that I have prepared for you all. So the bill became a law on July 29, 2019, when it was finally passed by the parliament. It was introduced in the Lok Sabha on July 19th, passed by it in July 24th, on July 24th, and passed by finally Rajya Sabha on July 29th, as I have written. It provides for a mechanism to ban unregulated deposit schemes and protect the interest of depositors. Honorable Supreme Court has made a lot of observations on the unregulated deposit schemes like Sharda chit fund scam. So Supreme Court has also taken a note of it, and this is not a very new thing. There have been a number of cases across India since 1991 after the insider trading scam
created by which Harshad Mehta and which Ketan Mehta got into, इस ये उसके बाद से ये कुछ ज्यादा ही प्रोलिफरेट करने लगा, क्योंकि उसके लूप होल समझ में आ गए। ऑल्दो इनसाइडर ट्रेडिंग इज वे डिफरेंट फ्रॉम अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, बट ये पता चल गया कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मार्केट के अथॉरिटीज की आंखों में धूल झोंका जा सकता है। इट डज नॉट हैव दैट मच ऑफ टीथ। दिस बिकेम नोन एंड हेंस such schemes were floated all over. अभी तो थोड़ा कम हुआ है because of the restrictions passed by the government in the previous decade। 1995 से 2005 या 2010 तक ये काफी ज्यादा था, ठीक है। एंड नाउ एंड देन इन 2013 Securities and Exchange Board of India was made the whole sole authority of looking into the registration and various other details। Guidelines were issued to it and various other responsibilities and roles were given to it to regulate the unregulated deposit bills, CIS and Ponzi schemes. But it failed in doing so, and as a result of which Sharda Chit Fund was a tight slap on the faces of not just the government but Securities and Exchange Board of India as well, and because of which it has finally been banned by the act when it was passed by the Rajya Sabha last month. So let us go into what it seeks to amend. The bill seeks to amend 3 laws, that is the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India Act, Reserve Bank of India Act, and Multi-State Cooperative Societies Act. I'm sorry, I forgot writing act at the end of RBI and SEBI, but these are in themselves various statutes governing RBI and SEBI. वो उसको amend करने को this bill seeks to amend these 3 acts. Now going to the next slide, there are 3 different types of, now let us delve into the actual problem in hardcore concrete terms as to what are the offenses. The 3 types of offenses created by such schemes and such depositors which needs to be tapped are firstly running of unregulated schemes, which is as simple as that, fraudulent default in regulated schemes, मतलब पेपर पे regulated होगा पर उसके डिफॉल्ट मतलब मैकेनिज्म में कुछ फॉल्ट होगा, कोई डिफॉल्ट उसके मैकेनिज्म में होगा, कोई डिफॉल्ट उसके प्रोसीजर में होगा, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन होगी रेगुलेटेड स्कीम होने के बाद भी। एंड थर्ड इज रॉन्ग इंड्यूसमेंट इन केस ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स। रॉन्ग इंड्यूसमेंट मतलब वही कि 25 दिन में पैसा डबल, इफ यू गिव अस द मनी योर इंटरेस्ट विल रीच 100% of the amount in just 25 days and you will get double the amount that you have paid. So this is wrong inducement, falsification. SEBI was empowered, as I've already told you, in 2013. Now we'll skip this point now. So let us talk about the features of the act, which is the heart and soul of the presentation that I'm going to present before you. Firstly, the bill defines a deposit as an amount of money received through an advance, a loan, or any other form with a promise to be returned with or without interest. मतलब एक एडवांस के फॉर्म में, एक लोन के फॉर्म में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट इज डिपॉजिटिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ एडवांस, लोन और एनी अदर फॉर्म विद और विदाउट इंटरेस्ट। डिपॉजिट कुछ गलत नहीं है, अनरेगुलेटेड जो अथॉरिटी आपसे डिपॉजिट ले रही है उसका अनरेगुलेटेड होना गलत है, उसका रेगुलेशन में सहयोग ना करना गलत है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, such deposit may be returned either in cash or as service. Let me explain you what deposit is according to this act, the latest act. Such deposit may be returned either in cash or as a service, and at the time of return may or may not be specified be. Further, the bill defines certain amounts which shall not be included in the definition of deposits, such as amounts received in the form of loans from relatives and contributions towards capital by partners in any partnership firm. तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डिपॉजिट नहीं मानी जाएंगी, जिनको ये बिल गवर्न नहीं करेगा।
अगर आप अपने रिश्तेदार से लोन ले रहे हैं वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नहीं तो पता चला अगर इसको नहीं निकालते तो अपने रिश्तेदार को 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लोन देने से पहले भी हमें रेगुलेट कराना पड़ता, विच वुड हैव बीन अ फार्सिकल थिंग। ठीक है, फार्सिकल थिंग टू डू, a very dumb thing to be kept in the bill. That's why these two things have been removed from the scope. And second is contribution towards capital by partners in a partnership firm. उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, इसलिए यहाँ पे उसको इंक्लूड करना वुड क्रिएट अ डबल अथॉरिटी। यू नो, दो जगहों पे एक ही चीज को डील करने से इट क्रिएट्स अ mismatch and confusion in the authority of which act would be trumping the other or would be superior to the other. Okay, currently 9 regulators oversee and regulate various deposit schemes. Let us see what they are, who they are. Firstly, the Reserve Bank of India. Second is SEBI, Securities and Exchange Board of India. Third is Ministry of Corporate Affairs, and fourth is state and union governments. ठीक है, अब लेकिन वो डिपॉजिट भी अलग अलग लेते हैं। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट्स द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दैट इज एनबीएफसीज। सेबी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स, एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रेगुलेट चिट फंड्स and Ponzi schemes and others as of now. Okay, all deposit taking schemes are required to be registered with relevant regulator under this act. अभी के लिए बस ये समझ जाए कि डिपॉजिट कहते किसे हैं, जो कि लिखा है पहले पॉइंट में, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। एंड दूसरा ये चीज समझ जाए कि सारे स्कीम्स एक्सेप्ट रिलेटिव का लोन या कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, उसको छोड़ के सब कुछ रेलेवेंट रेगुलेटर के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इसको भी डिफाइन किया गया है। द बिल बैन्स अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स। अ डिपॉजिट टेकिंग स्कीम is defined as unregulated if it is taken for a business purpose and is not registered with the regulators listed in the bill. ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, किसी रेगुलेटर के साथ, तो उसको कहते हैं अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। यहाँ एक छोटा सा मैं लूप होल भी बता देना चाह रहा हूँ कि इस बिल ने इस चीज को कवर नहीं किया है कि रेगुलेटेड होने के बाद भी अगर कोई पॉन्जी स्कीम कुछ गलत कर रही है तो उसका क्या करना है। वो हालांकि एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है, इट कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑल्सो। राइट नाउ द menace were actually the Ponzi schemes and deposit schemes which were not registered with the regulators, and that has been tapped by this bill. Now coming to the next slide, competent authority has been defined. Now, what is competent authority? What are its powers and what are the mechanism of its working? I shall all be dealing with it in the next point. So, the bill provides for the appointment of one or more government officers not below the rank of secretary to the state or central government as competent authority. ठीक है, not below the rank of secretary to the central or state government. Police officers receiving information about the offences committed under the new act will report it to the competent authority itself. ठीक है, further police officers may enter, search and seize any property which they believe to be connected with any offense. offense की जिसकी जो offense की मैं लास्ट में बात करूंगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट मेरा offenses को लेकर ही है, offenses and penalties। वो पेनल्टीज और ऑफेंसेस के बारे में जब पुलिस ऑफिसर्स को पता चलेगा तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे, जो कि एक सेक्रेटरी होगा किसी स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑन डेपुटेशन एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओके, केप्ट बाय द रेगुलेटर्स, दैट इज आरबीआई, सेबी या स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ लेट अस टेक a tour of as to what are the powers of this competent authority. Now, competent authority may provisionally attach the property of deposit taker as well as the deposits received, क्योंकि वो तो भाग चुका है, वो तो चंपत हो चुका है, तो उसकी जो एटलीस्ट प्रॉपर्टी अगर कुछ होगी तो उसको वो अटैच करा सकता है प्रोविजनली, एज वेल एज जो डिपॉजिट्स कुछ बचे होंगे उनको भी सीज कर सकता है। सेकेंड, summon and examine any person it considers necessary for the purpose of obtaining the evidence. Now, obtaining of evidence, there is a huge
there are a number of forms, number of facets through which evidences can be taken by the court or any competent authority. ठीक है, one of which is obviously examining the person that are or might have been involved. There is a suspicion of them being involved, or they were the neighbors and they know what the hobnobbing was going on. They had some suspicion on the activities of the Ponzi scheme that was running behind them, besides them. So beside them, so इसलिए यहाँ पे पावर दी गई है उनको एग्जामिन करने की. And the third one is order the production of records and evidence. Okay. Now, आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, competent authority will have the powers similar to those vested in a civil court. Civil court का मतलब इन्वेस्टिगेशन जहां पे खत्म हुआ, चार्ज प्रिपेयर करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का बाद चार्ज प्रिपेयर करके ट्रायल करना, ट्रायल करने के बाद फिर जजमेंट देना, ये सारा का सारा काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जिम्मे होगा. ठीक है. नाउ डेजिग्नेटेड कोर्ट्स का भी अलग एक प्रोविजन है. ठीक है. द बिल प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर डेजिग्नेटेड कोर्ट्स इन स्पेसिफाइड एरियाज. दिस कोर्ट विल बी हेडेड बाय अ जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आफ्टर प्रोविजनल अटैचमेंट. मतलब यहाँ पे मैं एक गलत बात बोल गया कि सारा का सारा ट्रायल भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा. नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिर्फ प्रोविजनल अटैचमेंट तक, एविडेंस लेने के लिए बुलाने तक और प्रोडक्शन ऑर्डर करने के लिए समन भेजने तक ही काम करेगा. आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई. इसलिए आगे का ट्रायल जो होगा, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स करेंगे. जैसे मैंने एनआईए में बात की थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एक स्पेशल कोर्ट्स बनाने की, ऐसे यहाँ डेजिग्नेटेड कोर्ट्स बनाई गई हैं. ठीक है. After the provisional attachment of deposit takers' assets, the competent authority itself will approach the designated court to make the provisional attachment absolute, to ask for the permission to sell the assets. ठीक है. The competent authority will have to approach the court within 30 days, extendable to 60 days. It will also open a bank account to realize and disburse money to depositors under the इंस्ट्रक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट. अब देखते हैं डेजिग्नेटेड कोर्ट की पावर क्या होगी. द डेजिग्नेटेड कोर्ट विल हैव द पावर टू मेक द प्रोविजनल अटैचमेंट एब्सोल्यूट, वैरी और कैंसिल द प्रोविजनल अटैचमेंट, फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव ड्यूज, एंड डायरेक्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सेल द प्रॉपर्टी and equitably distribute the money realized among the depositors. The court will seek to complete the process within 180 days of being approached by the competent authority. मतलब इसके चार powers हैं: making provisional attachment absolute, vary or cancel the provisional attachment, finalize the list of depositors and their respective dues, and direct the competent authority to sell the property of the deposit takers and equitably distribute the money realized. ठीक है. लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं कि सेंट्रल डेटाबेस बनाने की बात की गई है. द बिल प्रोवाइड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एन अथॉरिटी टू क्रिएट एन ऑनलाइन सेंट्रल डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन डिपॉजिट टेकर्स. ऑल द डिपॉजिट टेकर्स, दैट इज जो रन कर रहे हैं पॉन्जी स्कीम. ओके. जो कंपनीज या फर्म्स रन कर रही हैं, फेक ही सही, शेल कंपनीज ही सही, पर उन्हीं को डिपॉजिट टेकर्स बोला जाएगा. ऑल द डिपॉजिट टेकर्स, नहीं, हाँ, मतलब इसीलिए बनाया जा रहा है, सारे डिपॉजिट टेकर्स का लिस्ट बनाया जा रहा है ताकि उस लिस्ट से कोलेट किया जा सके इंफॉर्मेशन को. वो उसका एक्सेस सबको अवेलेबल कराया जाएगा, वो लिस्ट सबके पास पब्लिश की जाएगी, एंड वो एक सेंट्रल डेटाबेस से अगर कोई कस्टमर इन्वेस्ट करने जा रहा है और उसको थोड़ी सी भी डाउट है कि ये जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, डिपॉजिट स्कीम और द CIS स्कीम और द पोंजी स्कीम, whether it is genuine, whether it is authentic, or whether it's a sham created to loot him and other many innocents like him or her, then he or she can go and check the central database. ठीक है. जब जहाँ लास्ट में ये लिखा भी है कि central authority will be required to share all information on unregulated deposits with the authority. डेटाबेस अथॉरिटी को भी अपडेट करती रहेगी. मतलब यहाँ पे क्या निकला कि डेटाबेस अथॉरिटी सेंट्रल डेटाबेस बनाने में रियल डिपॉजिट टेकर्स का नाम तो लिखेगी, बट अगर कहीं किसी अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर का
अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकर का नाम आता है न्यूज में या वो पकड़ा जाता है, तो उसका इंफॉर्मेशन भी रखेगी ताकि समय समय पे लोगों को आगाह किया जा सके इसके बारे में. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, which is offenses and penalties. The bill defines three types of offenses and penalties related to them. These offenses are: first, running, that is advertising, promoting, operating and accepting money for unregulated deposit schemes. Second, fraudulently defaulting on regulated deposit schemes. ठीक है, and wrongfully inducing depositors to invest in unregulated deposit schemes by willingly falsifying facts. ठीक है, अब ये तीन ऑफेंसेस बता दिए हैं इस बिल ने, उसके साथ ही पेनल्टीज भी जोड़ दी हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्टिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स will be punishable with imprisonment between 2 and 7 years, minimum 2 years, maximum 7 years, along with a fine ranging from 3 to 10 lakh rupees. ठीक है, defaulting in repayment of unregulated deposits will be punishable between minimum 3 years and maximum 10 years, and a fine ranging from 5 lakh rupees to twice the amount. ठीक है. Further, and lastly, the last point that I am raising before you all is that the repeated offenders under the bill will be punishable with imprisonment between repeated offenders. मतलब मान लीजिए repeat कर दिया उसने offense, वही same offense, repeated offenders under the bill will be punishable with the imprisonment between 5 to 10 years, minimum 5 years, maximum 10 years, along with a fine ranging from 10 lakh to 5 crore rupees. That means the offenses and penalties that have been stated for those offenses by this act, they are very strict and they will leave no scope and no stone unturned in going on to make a great impact and clamp down on the unregulated sham deposit schemes, Ponzi schemes and central and collective investment schemes, CIS. Thank you so much for your attention. Bye bye.